So, so my screen is visible, Sangamitra. Ah, And see, today it is 4th, right? yeah. 4th and April. So today let's see what is our agenda is. Like I told you, now we can execute Python on. We can run Python Python code on what are the things we can run on IDLE, Notepad, CMD. CMD, and PowerShell. Power. These are the one. This is second one, and this is third one. This is fourth one, fine. In all these cases, and also we have one is fifth one is that is called IDEs. IDE. Okay, so IDE stands for what? Integrated Development Environment. In integrated development environment. So what is the meaning of this? Today we are going to discuss about this IDE only. IDE. So this IDE helps us in auto completion, we can say, or if there is any error, it will pop up, like we can understand that there is an error. So I will show you a demo so that you can understand. So earlier you were installing PyCharm, right? Yes, I have So installed it. PyCharm is also, yeah, PyCharm is also one of the IDE. See here, this is PyCharm community. So here you will be having some more facilities comparing to what we have learned till now. So now, for example, here I have, this is giving me a tip for the day. So now here, if I go here in this, just I'm clicking here and I'm just opening a new file, new Python file, and I'm typing hello, hello, just hello I need to type, and it given me this space. Okay. Now here, what are the things I can do here is same thing, print good evening, good evening. Okay, now I just wanted to execute this code. So what I need to do, I no need to, I don't need to wait for the interpreter like in the shell we were doing, right? We have what we can do is like right click and then you can have this run hello. Is that right? You can just click on this It was on debug. Hello. and you got this good evening. Yes, Yeah. we got it. So your next task would be like you have to install and you need to run on this also at least 1 to 2 program Yeah. in your free time. Okay. Huh. Now, for example, if I'm writing like a print and then I'm I'm using this, I'm just using 10 plus 2. So what I should get 10 plus 2? 10 plus 2, I should get 12, right? Huh. But it is showing me this error. See, this red line. A red line it is showing. It means what? There is some mistake is there. Can you tell me what is the mistake I'm making? See, the Those mistake is marks. here a Yeah. double code I have given, but here I have not given the double code. Huh. When I given the double code, the mistake is gone. The red mark is gone, right? Huh. So this is the main advantage using what this IDE. IDE is having what this run tool window. So many other features it has. This is just one feature. Yeah. See here, it will be it will be helping us to identify the error what we are making. Okay. Huh. So in some of the IDEs, these are the things we have. We have so many IDEs. One is PyCharm. So what are the advantages of the IDE is? First one is uh, it point out what it exactly the error is, pointing out the error,
and some of them they will in some cases auto completes, auto completes is there, auto correction will be there, correction, third point. So these are some of the advantages of what IDEs we can use for bigger projects. Okay, and um, we have some of the examples of IDEs. Some of the examples are such as PyCharm examples. So what are the examples we have is first PyCharm. PyCharm we have Jupyter Notebook. We have Atom. So like this, we have many things. Okay, many other. Even we have online compiler, online interpreters also. On the online also you can try this. Now let me show you on online even. So now see here, if you type just Python online compiler, so you'll get many online compilers also. Program is there. okay. So in why I'm telling all this is if for example in your system if you don't have all this, you can also go with the online one like print. Inside this print, I'm writing my name Vivek Pandey, and I just wanted to run this. So when I'm running, I'm getting the output here. Yes. So so this is about what online compilers also we do have, and see just if I'm showing you IDEs of Python. See what are the things you are going to get. You are getting this spider. We have Atom. We have PyCharm, PyDave, and 13 more are there. See spider again, Komodo edit. Many of the things I haven't used. I'm mostly using PyCharm and also the shell, the default shell. What I'm getting that. So this is these are the Eclipse, Visual Studio. These are the things which is integrated with the Python. Yes, Yes. yeah. So this is all about what IDE. Now I'm going to help you. I'm going to teach you what is this print statement is. Always we are writing print, right? So what are the things we can do with the print, and whenever I'm writing something like this print, yeah. Now whenever I write like for example A, this one, and B, this parenthesis if I write now, so it means what this both are a function. What are they? Function. Yeah, so this is also print function. We call it what? This is a print function. So whenever we have something with this parenthesis opening and closing, it is known as function. So this is A function and this is B function. So like this print is, it is inbuilt function of Python. Yes. Yes. First point, it is inbuilt. We are not creating this. It is already created. We are just making use of it. That's it. And Okay. second one is it supports multiple values. Now let's see whether it is supporting multiple values or not. How we can say that it is supporting multiple values? See here, options. So I'm just making it bigger. Okay. Now see print. See multiple values means what? Again I'm writing one. Again 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. So I am multiple things I'm writing, right? My Uh, multiple things I'm typing. So if I wanted to execute this, what I can do, control yes, and then fn f5 I can do directly. It okay. is giving me all these values. Yes. Yes. So what we can we have written, this is, it supports what multiple values.
Now the order, it is what? It is order. ordered. Ordered means what? The way we have given this, exactly we are getting the same thing, right? Are we getting 6 5 4 first? No, exactly. 1, 2, 3. Yes, exactly. So we can say that it is ordered type. Ordered it is. Now fourth one is, now we can also represent the strings in this. We can represent strings. Now what is the meaning of this strings? So first we need to understand what is the meaning of string here. So let's see. Strings are the collection of characters. Yeah. Collection of, so Characters. what is the meaning of collection of characters? For example, A. This is my string. Yes, ABC or any kind of a name. Okay. So for example, Rajan, anything. This is just an example of what? String. Uh, String example. Okay. So these are the string examples. Okay. And now important point is, these are represented in single quotes or double quotes. So fifth one is ये सिंगल these. कोट्स और डबल कोट्स का मतलब क्या है भाई? I will tell you. These are these are enclosed by single. Okay, I will write here. हाँ, these are enclosed by single, उसके बाद डबल और ट्रिपल कोट्स. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इज, इसका मतलब क्या है? अपने पास ये है ना, ये सिंगल कोट्स है. अच्छा, और डबल कोट्स का मतलब क्या है? इट कैन बी वही लाइक दिस. डबल डबल. ये डबल कोट्स है. और सिंगल कोट को ही अगर अपन ये लिखे ना, यस, लाइक फॉर एग्जांपल, यस. सो ये क्या है? डबल कोट्स. डबल कोट्स एक ही बार में डबल कोट्स लिख सकते हैं ना अपन. हाँ. डबल कोट से स्टार्ट करना, डबल कोट से क्लोज करना. ये सिंगल कोट से स्टार्ट करना, सिंगल से एंड करना. अच्छा. एंड ट्रिपल कोट्स मतलब क्या है? ये डबल कोट्स 3 बार. Here for example, this lines are my statements or some my names or characters, and I'm closing this. How can I close? 1 2 3. If I'm ट्रिपल कोट्स. starting, yeah, I'm starting with a triple and I'm closing with a triple. Okay. बीच में को जो होता है वो स्ट्रिंग होता है भाई. हाँ, स्ट्रिंग होता है, नहीं तो कुछ भी होता है वो मीन्स, या मेनली इट इज स्ट्रिंग. फॉर नंबर्स वी शुड नॉट गिव. यस. तो ये क्या है? सिंगल कोट्स है, ये डबल कोट्स है, ये ट्रिपल कोट्स है. ओके. हाँ, नाउ ओके. we'll see the example now. If I'm saying you this is a string, then what you will say? No, this is not a string. How the string will be? String will be enclosed with a, ये ऐसा. और ये अगर इसको भी स्ट्रिंग बनाना है तो क्या बोल सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं? डबल कोट्स में, या तो A B. सिंगल कोट और डबल कोट रख के एंटर करना चाहिए. हाँ, ये देखो. इसके बाद इसमें ना, RAJAN, राजन, इसको भी अपन बोल सकते हैं. तो यहाँ पे और एक पॉइंट है. Whichever code we are using for starting, that's the same code we have to use for closing. So starting and ending should be same with the ending, सिंगल और डबल कोट्स और should ट्रिपल. be same code, quotations codes. Okay. ओके. So now let's see the example here. First is, I'm writing without this. I'm just writing a name. So I'm just writing Hyderabad. हैदराबाद. अभी मैं ऐसा लिखा, तो अभी क्या आएगा देखना. लेट्स रन दिस वन. रन मॉड्यूल. एंड ओके, व्हाट इट इज सेइंग? द एरर आई एम गेटिंग इज नेम एरर. इसको हाँ. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे, इसलिए इट इज थ्रोइंग मी एरर. सो हैदराबाद इज नॉट डिफाइंड. सो हम यहाँ कोट रखना चाहिए भाई.
सबके Correct. पास. Correct. So seventh point is, if we are not using quotes for strings, it will throw error. कंपाइलर को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो. सो व्हाट इज द एरर? दिस इज कॉल्ड नेम एरर. बहुत सारा एरर्स है, बट ये जो है नेम एरर है. ओके. अच्छा. हाँ, तो अपने को कोटेशंस रखना पड़ता. सो नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है ना, ये देखो एक कोटेशन रख दिया मैं. अब बस एक ही रखा मैं. अब नाउ आई वांटेड टू रन दिस. रन. What it is saying? Undetermined string literal detected at line 1. You can able to see इसका. this? हाँ. हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये it will not accept. It is syntax error. So यहाँ पर अपने को क्या करना है? और एक कोटेशन डाल देना है, सिंगल कोट. ओके. अब now I need to run this. Run module. Did I got the output? या. Perfectly working? यस. यस. नाउ इसके बाद भी अपन कर सकते हैं क्या? लेट्स सी. लाइक मल्टीपल स्ट्रिंग्स. नाउ यहाँ पर जयपुर, उसके बाद राजस्थान. राजस्थान. अभी देखो, ये वाला एक स्ट्रिंग है, ये वाला दूसरा स्ट्रिंग है, ये तीसरा स्ट्रिंग है. सो इसके बीच में अपन क्या दिए? कामा दिए. So हाँ. in order to separate, if I wanted to continue different strings, I need to separate by what? कामा. कामा. कामा से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये दूसरा स्ट्रिंग है बोल के. ओके. सो नाउ अभी देखो रन करके क्या आता है. व्हाट आई विल गेट? यू कैन एक्सपेक्ट सेम थिंग, राइट? Yes, we are getting same thing. So this is what. And for example, you can also write like this. Print. इसी के अंदर you can write everything like सोनू, कामा, मोनू, कामा, उसके बाद रोहन. हाँ. अभी नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ. आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. सो मैं रन कर रहा हूँ. सेव किया. यस. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? या. कामास. यहाँ पर कामा भी आल्सो डिस्प्लेइंग, बट हियर कामास आर नॉट डिस्प्लेइंग. दैट्स इट. ओके. सो यहाँ पर कामास, बिकॉज कामास आर आल्सो इन द कोटेशन ओनली ना. या. हाँ. सो इसीलिए ये वाला एग्जांपल दिखा देता हूँ. आई विल note down this also. 8 point. For this what is the output? The output is with comma. Comma. And ninth one. हाँ, इसमें क्या है आउटपुट? ओ, पहले वाला. हाँ, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करेगा. In this one thing you have to observe. This comma will be replaced by what? White space. वो क्यों ऐसा रहा है भाई? कौन सा? ऊपर वाला तो कामा भी दिखा है, यहाँ नीचे वाला को कामा व्हाइट स्पेस में क्यों है? हाँ, because here we are writing the comma after the quotation. अच्छा. यहाँ पे देखो, ये जो कामा है वी आर राइटिंग आफ्टर द टू कोट्स. हाँ. अच्छा, समझ गया. यहाँ पर ना दिस कामा आई एम इंक्लूडिंग इन द कोट. कोट के अंदर कुछ भी लिखो, पूरा वो चलता. सब दिखा देगा. हाँ, सब दिखा देगा. सो जो फॉर कोड के एग्जाम्पल, बाहर लिखता है वो व्हाइट अब स्पेस अब में आता है. अब मैं देखो 1 लिखा रहा हूँ, 2 3 4 7. यहाँ पर कुछ और ये पूरा डिस्प्ले हो जाएगा. यू गॉट इट? At the हाँ. rate 1 13 4 6 7, this all are getting executed. एक क्यों हो रहा? क्योंकि we are not separating with the comma. Everything is inside the quotation. ओके. Understood? हाँ. अभी ये देखो, इसमें you have to notice one thing. Here whenever I'm separating it with a comma, what is happening here? White space. So in this
the comma is replaced by, white space. yes, white space, white space. Done. Yes. Now, what we'll do is I will write print. In this print, I will make uses. Right? अभी देखो ये देखो यहाँ पे I am writing रानी. उसके बाद यहाँ पर मैं लिखा this is what double quotes. Okay. Or I will show you one more thing. I'm using here single quotes and I'm using here double quotes. So now what will happen? So what is the output I'm getting here? Print error. I'm getting error here. Why error? Yes. यह एक ही कोट लगाया एक तरफ और एक तरफ दो कोट लगाया. So I need to end it with the same code or else I will get error. Okay. So now here I'm just separating it with, this is an example I'm giving you by using all the codes. Now Raja, Rani. Okay. Now one more code is pending. Three codes. Now यहाँ पर मंत्री. Okay. 1 2 3. अब ये देखो, this is in one print only I'm using, this is double quote, this One. is single quote, this is triple quote. Now let's see what is the output of this. I'm getting exactly, Same. yes. वो So this is, पहले लिखा है ना ऐसे ही आ रहा है. this is also possible. We can, in one print we can also use use different Different. different quotes. Example ये वाला. Done. Okay. Now it also supports heterogeneous values, heterogeneous data type. Heterogeneous data type मतलब क्या है? heterogeneous का मतलब जो 3 से ज्यादा हो. heterogeneous मतलब heterogeneous data types. Now I will tell you what is the meaning of the heterogeneous. See here, this is, ये क्या है मेरा 10 और 23 और 45. These all are what? Integers. Yeah. इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं इसको. अभी फॉर एग्जांपल 10.5 कामा 32.9 ऐसे नंबर्स पॉइंट में रहते ना. व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम, यस, इंटीगर. नो, ये इंटीजर है ऊपर वाला. ये नीचे वाला जो पॉइंट में है ना, उसको डेसिमल्स बोलते हैं ना. एक बार अपने स्कूल्स में वी हैव स्टडीड. सो इन पाइथन वी कॉल इट एज float values. Okay. And you know already strings, like Vivek, again hi, ये सब क्या है? Strings है. Strings. These are strings. These are integers. Done. So ये और भी ज्यादा है. Like Python has many data types. 14 है. We'll discuss that. But as of now, to have you clear understanding about this, so I'm just discussing only these three. Okay. Okay. So it also supports heterogeneous, मतलब different data types को support करता है Python, a print statement. Now for example here I'm writing here print now 10 comma 12.78 comma 13, not now I need to write some strings, right? So I'm writing Rajan Pandey. Okay. So ये पूरा different data types है ना. हाँ. ये जो है इंटीजर है, दिस इज फ्लोट वैल्यू,
and this is the string. So total how many? 3. Three data types we have. So now let's see whether it is executing or not. So see, it is executed. Yeah. Yes. Yes. Yeah. It, So this is the point here. It supports heterogeneous data type. Now coming to this 12th point. 12th point, it talks about operations. We can perform some operations. We can perform operations in print statement. So for example, अभी ये 10 है प्लस 12 प्लस 45 प्लस 63 कितना होता है? 108, 60 और 40, 100, 100 और 10, 110, 1, 1, 110 प्लस 10, 120, 120, 120 और ये 5 और 2 7 है ना, 127, 130, 127 और ये 3. So let's see 130. what is the answer. We are getting the answer. Yeah. Yeah, so this is what, this is one of the operation, this is one of the operation it is performed. So ये operation perform हो गया. कौन सा operation perform हुआ? Addition. Add कर दिया अपन number को. Yes. Uh, Now in the same way, if I'm asking you multiplication, ये multiplication का symbol है. Okay. So अभी क्या होता? 10 into 12 into 45 into 63. Yeah. So can you use your calci or calculator and tell me minute. 3,40,200. how much? 3,40,200. Acha, let's see. 3,40,000. Perfect. So it can able to do the multiplication also. Yes. Yeah. Yeah, it is doing multiplication even. So multiplication is very hard, bit hard task, but it is doing it in seconds, microseconds. Multiplication done. So भाई ऐसे, डिवाइड कर सकते हैं, हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं. हाँ, it will divide also. We'll see one number we'll see and we'll try to divide it. So 5, 6, 9, 3, 7, 8 divided by 2 कर दो, इसका half कर दो. You tell me how much you are getting. एक मिनट. 2,84,689. Mm, same. हाँ. Yeah, so we can also divide it. Okay. So these are the basic fundamentals like division भी हो गया. Division. We can also do the division part. Done. अभी क्या बचा और माइनस तो कर ही देगा. हाँ. Now for example, if I'm writing like this minus and I wanted to subtract 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 5 6 अभी कितना होता? How much it is? 4,45,922. Okay, let's see. Yeah, same. Yeah. Yes, so it means what we can also do? Subtractions. Yeah, subtraction also. So these are the basic things which can be done by Python. Print statement, subtraction भी हो गया. So these are the few things. Now one few more things we have to understand here is
So operations तो ये कर दे रहा है. Print statement is very powerful tool. बहुत powerful function है. So this one word I need to mention here. So what it is powerful. Here 0. It is powerful function in Python. Okay. So it is doing so many tasks. Now coming to this. Now let's see here what else it can do. Now for example, I just wanted to add two strings. क्या अपन two strings को add कर सकते हैं क्या? Strings. I wanted हाँ I wanted to add Raja plus Rani in the print statement. So can we do this? No. Adding, adding मतलब it will not add as numbers, but it will do what? Concatenation. So it will concatenate it. So let's see what we can do here is yeah 13th one, two strings can be joined. That is known as what? Concatenation. Yes, concatenation. Yes, so concat वही बोल सकते हैं अपन उसको join कर सकते हैं. Concatenation. Oh, it is concat. Yes. Now let's see how we can do that. Print, and in this print, I'm just writing here dog plus cat. अभी क्या होगा आउटपुट? What I Dog. got? Dog Dog. and Cat. इसको बोलते हैं concatenation. So ये पॉसिबल है. इसमें दो स्ट्रिंग्स को अपन concat कर रहे हैं and the output is what? This one. Yes. Yeah, this is called concatenation. Now in this, so for example, if I'm writing here plus concat हो गया animals, so everything will get concatenated, right? Plus Yeah. animal भी आ गया, मतलब पास में आ जाना. Now I wanted to have something in between, some space होना है मेरे को. तो ऐसे space दे दिया और ऐसे space दे दिया. So will it take space directly? No, it is not taking. So space के लिए अपन क्या करना है? What we have to do to have some space? I don't want, my requirement is not to get this. I wanted some comma, or I wanted some space between them. Then what I can do? So Put for example, space. I'm taking like this. मेरे को space होना है, तो मैं space कर दिया. यहाँ पे ये space को भी मैं string में ले लिया. हाँ. यहाँ पर भी मेरे को space होना है. उसके space के बाद again I have to add, right, all this. Yes. तो यहाँ पर space हो गया. उसके बाद अपन concatenate कर रहे हैं cat को. Again here also space and then animal. So now let space आ गया. हाँ. Yes, this Dog. you have. Cat. So here dog तो single quotes में लिख दिए, but here we have, this is what? Space. Okay. Okay, but And इसके बाद ये भी क्या है? ये भी एक space है. So दो spaces है. So to give the space in between them, we can use like this. So 14th one is, in order to provide space between two strings or two items, we can use space in
कोड्स, एग्जाम्पल ये वाला, यस। हाँ हाँ, तो अभी ये जो है कंकैटिनेशन हो गया। नाउ अभी क्या होना ना कि आई जस्ट वांटेड, अभी मेरे पास बहुत सारा है। सो लाइक आई हैव 1 lakh, one 1 lakh 1 lakh names I have in the print, and उन पूरों को स्पेस लगाना है। For 1 lakh strings I have to separate them by what? Space. स्पेस। तो पूरा को स्पेस लगाते जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? या If we use like above, too much of time it will take, too much, बहुत टाइम हो जाएगा। एंड एट द टाइम my client or whoever giving me the project, he will remove me from the company, like he will terminate. He will say that what this much time you are taking to do this such a small thing. So for that also we have some special things in the Python. Now for example I'm saying Geeta, Geeta, comma, Sita, Sita, comma, Rita, Rita, and then we have Sunita, Sunita. अभी इनके बीच में ना I wanted a space. Okay, so for that we have separator. I wanted to separate them by having more space. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन? Use this and अभी फॉर एग्जाम्पल विदाउट, बस ओनली विद अ कामा, हाउ द आउटपुट विल बी? आउटपुट कैसा आएगा? वाइट स्पेस। हाँ, वाइट स्पेसेस आएगा, राइट? वाइट स्पेसेस तो आ रहा है, white spaces I'm getting. But if I wanted to increase more spaces, let's see what we can do. Comma, like separator, this is separator is equal to, see how much space I have given, 1 2 3, 3 spaces I given. Now let's see how this will be. थोड़ा थोड़ा बढ़ गया ना स्पेस यहाँ पे, हाँ और else if I'm giving like this, बढ़ा कि नहीं स्पेस? see this, सेपरेट करने। हाँ, यहाँ पे जो सेपरेटर है ना, दिस इज यूजिंग एज सेपरेटर एसएपी, एंड इट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ऑल दिस, गीता, सुनीता, रीता, एवरीथिंग. सो अगर 1 lakh हो, if it is 1 lakh or 1 crore, for everything it will be getting separated with a wide space. So it is not only for separating, it is not only for the space, it can be used for a separating or with any other things. So for example, in two names I wanted to keep in between at the rate, ठीक है? ओके So I can keep just in a single quotes at the rate. So now what it will happen is, see here at the rate आ गया सबके बीच में, हाँ हाँ जो वाइट स्पेस था ना उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं एट द रेट से. So we can separate it by our own separator. For example, I wanted to separate by exclamation mark, आ गया exclamation mark. Yeah, so this is the beauty of what? Separator. So we can use SEP is equal to A to separate two items in the print. Now we can use this to separate. So what it does, सेपरेट द whatever we are giving in the SEP, it is replacing with a white space. Now example is this part here, exclamation है तो exclamation आ जाएगा, और आउटपुट भी लिख दे रहा हूँ so that will not get confused and it will be easy for you to practice this one.
Okay, that is the Okay. fifth observation. 16th, 15th observation, 16th observation. Now ये हो गया ना. हाँ. Now one more thing you have to observe is, अभी ये है, अभी ये मेरे को ना ये पूरा गीता एक लाइन में चाहिए, सीता और एक दूसरे लाइन में चाहिए, न्यू न्यू लाइंस में चाहिए. अभी ये पूरा कैसे आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहा है ना. हाँ. Everything is in one line only, but I wanted to give it in separate lines, so I can use backslash n and I can run. पूरा separate line में आया ना, ये दूसरा line, this is new line, Rita is in new line, Sunita is in new line. Yes. Yes. Yeah, so this is what observation is. In order to print the output in new lines, we can use sep with a backslash n. This is an example, and output ऐसे आ गया. Yes. Yes. So नया न्यू लाइन में आ गया ये पूरा. I have a तो doubt. हाँ. यह गीता सीता ये सब लिखा है ना भाई यहाँ. हम उनको वो नंबर. चार लोग काम कर रहा है और उनको सैलरी आ रहा है. हम उनका सैलरी के बाद में लिखना पड़ता है तो कैसे लगता है? What? We have to write the four. We have given the names here for just think them as workers on any field. Hmm. So how we can divide them with age or salary or something else? Are there mm, different in workspace? That we cannot do right away now. Or, That we can do by using dictionary concept. That is one of the concept which we'll learn in coming classes. That is one another data type. okay. This is not related with one other. अच्छा. I understood, like you mean to say अगर roll number है, so हाँ. with this roll number I wanted to get other details. Yeah. So that is what SQL concept we are talking about. अगर मैं Okay. roll number दिया 103, I should get the details of 103. I हाँ. understand, but not in this. We'll see it in the dictionary. Okay. So what I was talking about, like separate line में आ गया ना. हाँ. Separate line में आ गया. Fine. Now one more thing is, like for example print अभी मैं यहाँ पे लिखा मैंगो, और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा सपोटा. सपोटा ही है ना, तेलुगु में बोलते हैं उसको. हाँ. उसके बाद प्रिंट, और वो सीताफल बोलते हैं ना उसको. हाँ. सीताफल. हाँ. अभी ये पूरा क्या है, ये पूरा, लेट्स सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग ना, हाउ इट विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड. अभी मैं रन किया, रन द मॉड्यूल, हाउ इट इज गेटिंग, कैसे प्रिंट हो रहा है. आर दिस ऑल प्रिंटिंग इन वन लाइन. No, different lines. For example, one more print I will take, print, and I will take here जामुन. अब ये जामुन कहाँ पे प्रिंट होता, सेपरेट लाइन में, न्यू हाँ. लाइन में. हाँ. यस, इट इज ऑल्सो प्रिंटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ प्रिंट, एक नया प्रिंट ले रहे ना, ऑलवेज इट इज गिविंग अस आउटपुट इन द न्यू लाइन. दैट इज व्हाट द मेन observation here. So what is the observation here? So whenever we are using different print, the always the output is in new lines. एग्जाम्पल यही है, अगर ये वाला प्रिंट करें ना तो पूरा नया नया लाइन में आ जाता. यस. हाँ भाई. हाँ. अभी फॉर एग्जाम्पल आई वांटेड टू अटैच दिस जामुन with this सीताफल. I wanted to attach this jamun with a सीताफल. What I can do, END is equal to, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लगा देंगे, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. सीताफल और जामुन अटैच हो गए, हाँ. हुए ना अटैच. नाउ एंड अगेन आई वांटेड टू अटैच द सीताफल टू द सपोर्टा.
एंड वाला है, सम स्पेस, यहाँ पे क्या हुआ? पूरा एक ही लाइन। नहीं मतलब ये पूरा तीनों एक लाइन में आ गया, एंड एंड। यस। या अगर मैं पूरा एक ही और एक लाइन में इसको भी करना है तो आई वांटेड टू राइट ऑल दिस फ्रूट्स इन वन लाइन। एन इज इक्वल कोटेशन स्पेस। तो यहाँ पे ये देखो ये कैसे आ गया। सो व्हाट वी कैन से इज वी कैन गेट आउटपुट इन वन even we have multiple print. So what we can do with multiple प्रिंट print stm print statements, we can still get output वन लाइन। in same line or one line using what e and d is equal to इसके अंदर। Now whatever the things you are giving now in this, it will also get printed before that. Now for example यहाँ पर 1 2 3 you are printing, you are typing. Now यहाँ पर देखो 1 2 3 आ गया, किसके पहले आया? सपोर्टा के पहले आया, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ करो तो सीताफल के पहले आता। वन केज रखेगा तो सीताफल के पैर। हाँ। सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ दिस। या 90। so these are the some of the print statements. Yes, so या this is done. Now we have print। अब ये प्रिंट है, अब ये प्रिंट के अंदर मैं प्रिंट डाल रहा हूँ, प्रिंट एंड अगेन प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर प्रिंट है तो क्या होता, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे विवेक पांडे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट हियर। क्या है आउटपुट? नाम आया एंड देन वी गॉट व्हाट? नन। वी आर गेटिंग व्हाट? नन। या फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, नथिंग, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, एंड देन आई एम ट्राइंग टू गेट, आई एम गेटिंग व्हाट? नन। हाउ मेनी नन्स टू and how many prints? थ्री। Yeah, so what we can write here is the default return type of the print statement is none, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज ये वाला एग्जाम्पल है, एंड इसमें कितने प्रिंट्स हैं? थ्री। टोटल प्रिंट इज 3। एंड आउटपुट में नन जीरो। कितने आ रहे हैं? नन, जीरो। नन दो आ रहे हैं ना, हाँ। दो नन। if I'm taking one more print here, how many nuns I will get? थ्री। Yes, I'm getting what? Let's see, 3 nuns. Yes, हाँ। yeah. So this is about none. So now one more thing, print। अभी ये है, अभी for example I'm writing like this, what is this? Double quotes ना, हाँ। and I'm just separating it with one more double quotes. Now यहाँ पर ना मैं I wanted to create some design. Design means 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पूरा 0 0 0। Now यहाँ पर some space and यहाँ पर all this, उसके बाद यहाँ पर something like this, उसके बाद यहाँ पर। Now is it possible? अब ये प्रिंट करता कि नहीं करता? करता है भाई, वो तो ग्रीन में दिया है ना यहाँ। हाँ तो देखेंगे करता है कि नहीं करता। इट इज गिविंग मी एरर। सो डबल कोट्स से ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं, परहैप्स वी गॉट अ कॉमा। So it is saying with the double quotes we cannot create some kind of designs. Earlier we used to see some designs, right? SMS में आता था, like at the day of flag hosting, Republic Day or Independence Day, with the alphabets or numbers, ना, या special characters, यस। yeah, some special characters, yeah. So these things are not valid with the double quotes. A design जो है double quote से नहीं आ सकती, single quote से आ सकता क्या? देखेंगे, let's see. No.
Single quote is also not giving me. Then when which one is going to help me out with Three. triple quotes? Yeah, triple quote is going to help me with the designing part. We can see exactly आ गया ना? हाँ. Yeah. So this kind of design or एक से if it is more than one line, this is what 20th observation. More than one line if we want to print below design ये वाला design, then we should use क्या use करना है Full quotes. ट्रिपल ट्रिपल कोट्स यूज करना है इसमें. हाँ. ठीक है. ठीक है. सो नाउ 21 और एक है ये वाला जो है. नाउ फॉर एग्जांपल if I am writing something like this is important line, so if I'm writing like print, I'm writing some password here, that is password is 123. तो मैं ये important line है तो इसको अपन कमेंट कर सकते हैं. सो दिस इज important line will not printed, ये कमेंट हो जाता. ठीक है. देखो it's got printed. 1, 2, 3. First 1 2 3 printed, this is not getting printed, so this is called what? Single line comment. Okay. So it will not get printed here. So let's see here, we have two comments, two types of comments. One is single line Line. comment. Single line comment is represented by what? Hash. Example is this line is important, मतलब ये print नहीं होता, it will not get printed. ये user के लिए है, if someone is working on the Python he will understand that okay this line is for this. और एक है multiple line comment. So what is the meaning of multiple line comment here is so many lines. For example, how we can write is with a triple quotes, and if I'm writing anything here, hi, how are you, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी, and then here everything, and then I'm closing it with triple quotes, and Okay. then I'm using print hello world. Hello world. अब देखो what it will printing, it is printing only, Hello. Wow. it is only printing hello world, not all these. So these all are covered, this will not be getting executed. Okay. Okay. So multiple lines comments का मतलब क्या है? yes, ये है पूरा dashes, उसके बाद we are using triple quotes. So that's it for today. So today we have learned only about print statements, right? Yeah. हाँ. So what we have learned in today's class, Sangamitra? Print statements. How to use them. What are the quotations? What are the Closing. observations? So I wanted you to just practice on all this. Everything you have to execute. Sit 1 hour or 2 hours of a time. Spend some time. Yeah. Practice all this, and if you are getting any error, please reach out to me. Okay. Yes, all good. Good. So how was session? Today's session? How you felt? Good. Learned something? Definitely. क्या है, Okay. ये एक डाउट है यार. हाँ. ये सब हम कोट्स लग रहा है ना, वो सब हाँ. वो कोट निकाल के लिख नहीं सकते हैं. आई मीन रन नहीं सकते सॉफ्टवेयर. नहीं कर सकते ना. नहीं कर सकते. अगर बाई चांस 1 2 3 लिख सकते हो, बट हियर इट इज लाइक यू कैन रन 1 2 3, ये पूरा कर सकते हो. अच्छा, लेकिन वो कोट्स हाँ. चाहिए. हाँ, स्ट्रिंग्स के लिए वो चाहिए ना, नाम के लिए नेम. हाउ हाँ. टू सेपरेट दैट नेम और नंबर्स को सेपरेट करने के लिए फिर वी आर राइटिंग डायरेक्टली. नंबर्स तो डायरेक्टली लिखना है, अगर नेम है तो वी आर गिविंग इट कोटेशंस. अच्छा. वो मशीन को समझाना है ना कि ये नेम है बोल के, वी आर हाँ. गिविंग इट.
the Thanks, bye. string. So that's all for today, and it's all about your practice. How much you are going to practice all this 21 points right here. Uh, So up to 21 points, I wanted you to just practice each and every one, everything. Have you seen the videos like which I have shared? ah, Go through it. yeah, I have been watching them. Good, good. So you can like तो पूरा subscribe यूट्यूब also. में लगा है ना भाई. हाँ नहीं बट वो पब्लिक नहीं है ना लाइक हाँ. दे आर प्राइवेट यू कैनॉट इफ यू गो इन माय चैनल ना you cannot find it, so भाई it is आप just only for DevOps भी चाहिए. hmm? आप DevOps, will you teach us DevOps too? I mean, not me. One of my friends Hmm. has asked to me. Oh, he's asking DevOps. हाँ. Currently I'm a bit occupied, but I will if I'm having any kind of availability of my time. Okay, bye. Okay, Sangamitra, thank you then. Thank you, bye. Bye. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.